Thank you very much. And every post-lunch session is a kind of torture. When you start talking and when you are talking about history, philosophy, poetry in a post-lunch session, I know it's torturing, but let's bear with us. We are talking about Bhima Bhoi, the poet and the rebel. As a poet, he was one of the most compassionate voices of our time. His poetry holds the most essential characteristic of tribal life. I think he was the only Indian poet who created a world of his own where tribal imagination was an integral part. Before him and after him, the tribal life is hardly portrayed in any of Odia poetry. That's not a great thing to say. He is the first poet who talks about Bhata and Bitta, the struggle for rice and struggle for wealth. So, we are going to talk about a poet who is condemned during his lifetime as a heretic. Today, we say he's a great poet, he's a saint, but in his lifetime, he was condemned by everyone. There are many newspaper reports where Bhima Bhoi was condemned as a heretic, as an anti-religious person, as a threat to religious institutions. And of course, he was a threat to religious institutions because he questioned all kind of power centers. As a poet and as a social thinker, he never go with the establishment. So he was basically an anti-establishment voice. We are going to talk about that, and with me, who are here, particularly I want you to know the person who is just in my right side, Mr. Fanindam Deo. Fanindam Deo was teaching history, but his work on Bhima Bhoi and his work on Mahima Dhamma is an extraordinary one. He is a rare historian who is hardly known in the mainstream of Odisha, but his contribution is invaluable. So I want to start this session with the opening remarks, and I have a particular question to ask. Fanindam Deo, if we consider Bhima Bhoi as one of the most compassionate voices, and at the same time he was the most rebellious character of his time, this rebellion and compassion, how do they gel with each other? Thank you, Kedar. And because I'm a student of history, it was an opportunity for me to, when I got an invitation of a project, that cultural network and Indian civilization and religious movements. At the time, I had worked on the tribal, especially Kandhas, and I came across two poets. One is Yoga Das, second is Bhima Bhoi. Everybody knows about Bhima Bhoi, but very few know about Yoga Das. And he was very innovative. He was talking about a demon, Mushika Datta, who was the son of Ravana. And that was his innovation, which was earlier than Bhima Bhoi. And when Bhima Bhoi we come across in 19th century context, we know that 19th century history of Orissa, that the colonial administration or colonial system entered first southern Odisha, then northern Odisha, then western Odisha. And that brought a change in the socio-economic, political
scenario of Orissa, and in this process, the exploitative system got strengthened. The Brahmana Kshatriya alliance, which was already there, and we know that Bhakti movement raised a question against this dominance of this in the 15th, 16th century by Panchasaka and others. Brahmana theory, that they saw Adi Jagannath in their day-to-day life. And in that process, they challenged the text, the authority of the Brahmins over the text and other rituals. They raised this voice. And now we come to the 19th century. 19th century, you know that first protest came from the tribals, peasants, and from 1810, you will find entire 19th century, hundreds of peasant movements and tribal movements, and all of them were suppressed. And there was a reaction, 4 types of reaction. One is that some of the tribals, they try to become Kshatriya. Some of the tribals withdrew from the mainstream and went to the interior forest. Third group, they revolted against this and they were suppressed. And the fourth one is very important because this group utilized our tradition, our text and literature to reinterpret and strengthen their belief system and their rights. And Bhima Bhoi was one among them. And what he told? In his very first text, Nirbeda Sadhana, he told that earlier than Bhima Bhoi, in this context, one person was talking about the moksha of common man, that is Mahima Swami. He was traveling through Garjats and Orissa, and he was talking that for moksha, there is no need of any text or any ritual or any visit of pilgrim or any worship of idols. Simply, you can, if you realize, you can achieve that moksha. And Bhima Bhoi, in his first text, when he was only 16 years old, perhaps, he wrote that this is not Mahima Swami is not an ordinary person. He is the creator of the creators. And he is roaming in Orissa with the presiding deity of Orissa, that is Jagannath. On the arrival of Mahima Swami, the creator has come to this world, and with him, Lord Jagannath is roaming as his Sishya. This is totally innovative one. A young man of 16 claiming that the creator has come to this world not as an avatar, but he himself has come and he is roaming with the common people, eating with the common people, the cooked food in the open. And Lord Jagannath has left the temple, and this is a totally innovative and a rebellious stand that he was taking. And in the last chapter you will find, in this Nirbeda Sadhana, that he was talking that all the kings will surrender before this Mahima Swami. All these Brahmins will surrender before this, and Mahima world will be established, where all corrupt will be punished and all righteous person will rule this world. You can imagine from this how rebellious or how he was 2 steps forward than Panchasaka and 2 steps forward than his guru, Mahima Swami. This is the part. And he was talking in this, the second part, that is how he was able to regenerate the faith, or that what you told, that is the compassion and I'm rethinking that our in the initial space that was quoted,
that ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରବିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିବା ସବୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ. This ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ, if you will compare, in that context, it was that Stuti Chintamani was perhaps written at the ripe age of Bhima Bhoi, and in that context he was talking about how to save this entire world and how he was ready to suffer. But if you will compare between Nirbeda Sadhana and Stuti Chintamani, perhaps when he was talking about Jagata Uddharapau, his Jagat is totally different. His world was totally different. His world perhaps will not include the corrupt. Only the righteous person will get Mukhya. That he was very clear in his first text, and whether he is clear in Stuti Chintamani, I am not sure, but I still have a question that perhaps it was a rebellious stand not to give moksha to everybody. That's a very good point you brought out, Fanindam Da. Actually, when he composed Nirbeda Sadhana is a text. It's not only very radical in attitude, but it completely decomposed the mythological imagination of Udiyas. It's a completely, Jagannath is not only the presiding deity of Odisha, he is the prime disciple of Mahima Gosai, making him subservient to Mahima Gosai. That is one narrative. And the other narrative in Nirbeda Sadhana is that, you have to demolish the power structure of religion. The religion is there in the street of the villages. So Mahima Gosai had a very, all his life he never built a single ashram. He roamed from this village to that village, and while leaving the village, he always burned down his ashram. Never ever he established a single ashram in his lifetime. And it's an irony that after his death, there are so many temples dedicated to Mahima Gosai. So that's the irony about him. And coming from that background, it's not only Nirbeda Sadhana, the Ashtaka Bihari Gita, Chautisa Madhuchakra, where you can see that, his rebellious character is coming out fully blowing. And when he's writing Stuti Chintamani is a text which mostly talk about the human liberation. Okay, he is talking about an utopian world. He is imagining an utopia where definitely righteous persons will get a place, but who is that righteous person? The biggest question is, he writes in many bolis, he said that, if he is a fisherman, let him do his fishing. If he is a butcher, let him do the killing. Absolutely no problem with that. So his righteousness is, people who works against humanity will not get a place in his utopian world. So his definition of right or wrong is something beyond the so-called Hindu ethical value. So next going to Basudev Sunani. Basudev Sunani, we know that he is a poet who is writing from the margin. He represents the voice of oppressed, the voice of Dalit in Odisha. And how you see the text of Bhima Bhoi in present context. We all know that he is the first person, he is the first poet who brought out the voice of margin. Earlier, the poetry was the imagination of middle class Odia. So, first poet who is bringing and strongly bringing, not that, in Achyutananda or in Panchasaka, there are certainly voices from the margin, but that is veiled with some kind of mystic silence, a mystic imaginative world. But Bhima Bhoi
came out explicitly. He was a mystic, but his mysticism was more real than any other one. So now it is up to Basudev Sunani to decode that language of a common man in Bhima Bhoi's poetry. What was that language and what is that imagination which makes him the founder of common man's voice in Odia poetry? Thank you, Kedar, and good afternoon to everybody, all the panelists. I hope there are very few numbers of non-Odia speaking people. Very few number, perhaps. Yeah. So better, since I will be citing some of its stanza, so rather I should prefer to speak in Odia. Bhima Bhoi ko babadre Professor Fanindam Deo जो कथाटा सब कहले ऐतिहासिक दृष्टिकोण केमती सब आसिले एवं केदार बाबू जो कहते आमर प्रदीप भाई कहे गोटे बहुत बड़ कथाटा सब है भीम भोईंकर कथा ही वाज कंसर्न अबाउट दिस सोसाइटी जदि मनीष सहित कौनसी लोकर संपर्क नहीं माने कंसर्न नहीं ताहले से मनीषर कथा कहि पारिबो नाही ही वाज वेरी मच कंसर्न केवल सब सोसाइटी रो कथा नुह मनीष समाज रो कथा नुह से प्रकृति रो कथा एनिमल्स रो कथा सब कथा सब कहिसंती एवं जेमति कि सब ब्रह्मांड रो कथा कहिसंती एवं जगत उद्धार रो कथा कहिसंती तेणु मु मोर परिवार मोर सोसाइटी कि में भुवनेश्वर कि भारतवर्ष इत्यादि कथा नहीं विश्वर कथा सब कहिसंती जने लोक जदि कंसर्न न हबो ताहेले एते बड़ कथा कहि पारिबो नाही जदि जे कंसर्न होउची ताहेले ताकू सब देखा जीवो मनीषर सब प्रकार कथा सब देखा जीवो जहाँ जहाँ मनीष समाज रे सब घटुची सेति भितरे जो डिकोडिंग कथा सब कहले सब केदार बहुत बड़ कथाटा जे से सब बाबद रे सब कहिसंती धर्मानुष्ठान रे किछि नाही बोली से कथा कहिसंती अलेख जो दिन सब कहिदेले सेटा तो गोटे बहुत बड़ भारी माने गोटे प्रोटेस्ट दैट वेरी वर्ड इज ए ग्रेट प्रोटेस्ट अरूप जितकी बेले कही दौरान किसी रूपरेख ना ये शून्य देही ये एठू ही प्रोटेस्टा आरंभ होची माने जेते सब पूजा विधि एवं मूर्ति पूजा इत्यादि सब बाबद रे से गोटे संग्राम करू वज्र ध्वनिटा सब उच्चारण करूछंती जो ट्रेडिशन को सब भांगीबाटा सी सबु लोकंकर बाबद रे सब कहिसंती मु माने साहुकार को भय करे नाही राजा को भय करे नाही इत्यादि सब कथा सब कहिसंती महिमा गोसाई एवं शून्यर कथा कहिसंती जे शून्य इज ए गॉड एंड गॉड इज शून्य बोली गिरी कहिसंती से जिनिसटा सब बुझिबार अछि बोली गिरी कहउचंती से फिलोसफी भीतर को जिबि नाही किंतु सब मो कॉमन कथा गुडा को जेतके बेले सब कहिबी केतेरा कथा कहिबी कहउचंती मते जितके बेले सब कहले कि जे डिप्राइव्ड कथारा कहूँ मु अनेक समय सब मु मोर निजर लोकंकर कथा एवं मोर कथा को सब मु लेखे भीम भोई केते सब कंसर्न थिले से कथा मु कहूँ एठी आपण माने जेते सब लोक माने सब बसिछंती आमे माने जेते सब बसिछु केवल आमर निजस्व शक्ति बल रे केबे हेले बसी नाहु जो माने जदि मोर निजस्व शक्ति बल रे सब बसिछि धन बल रे बसिछि बोली गिरी कहउछंती मु बोझे मु भाबी जे से माने गोटे भ्रमात्मक परिस्थिति रे सब अछंती आज मु जेमती सब उठिली मु दांत घसिली पेस्ट टाकू केही गोटे सब तैयारी करिछि ब्रश टाकू केही तैयारी करिछि आज मु खाइली भात चावल को केही सब सब बुणीछि धान करिछि ताकू
चाउल करिछि जने रोसई करिछि मु जेतिके बेले सेविंग हेली से सेविंग जिनसटा को सब ब्लेड को सब तैयारी करिछि मु पैंट पिंधुछि जेतिके बेले ए पैंट को सूता काटी जने बटम लगैछि जने केते कोन कोन सब करिछि बूट को जेतिके बेले सब मु पिंधिछि एई बूट टाकू को लोक सब तैयारी करछंती पुलिस करछंती केते केते एमती जदि टिके निकी करी जदि आमे जदि देखिबा ताहले मु एठी जो ठिया हेछि आपण मानकर सामनारे किबा मो सामनारे आपण माने जो बसिछंती हजार हजार संख्यार लोक मानकर सपोर्टटा अछि आउ विदाउट देयर सपोर्ट इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल टू बी इन फ्रंट ऑफ यू किंबा मोर सामनारे आपण न थांते कि आपनकर सामनारे मो न थांती आमे जो पानी पिउछु केते हजार हजार लोक संख्या एई कथाटाकू बहुत लोक देखि पारंती नाही बहुत लोक देखि पारंती नाही एवं मु तो भाबी भी जो माने देखि पारंती नाही से माने प्रकृति रे मते लागे कि नहीं जे कृतज्ञ श्रेणी रे सब गणा जिवे बोली करी एवं जो माने सब देखि पारंती प्रकृति रे एते लोकंकर समर्थन अछि मोर जो लोक मानकर समर्थन को नहीं करी सपोर्ट को नहीं करी मु ठिया हेछि एवं मोर लेखुथिबा कलम मु चिंतन करूथिबा सब किछि करूथिबार कथाटा तो सेई कथाटा को भीम भोई एकदम ठीक भाव में देखिथिले एवं सेइथि पई से टोटली कॉमन हे जाइथिले ता कारण तांको पाखरे सब देखुथिले एतकी सेइथि पई से केबे हेले लोकलाइज हेइ नथिले एवं ए विश्व ब्रह्मांड जदि अरे लोक जदि नथिले समाज जदि नथिले मु केमति बंचिबी एई कथा से कहउचंती माने मु बंचिबा पई समाज दरकार थेमानकर उद्धार हबार कथा एवं विश्वर उद्धार हबार कथा तो एथिरे सबुठारु बड़ कथा जे he was strongly against any kind of discrimination और सेथि पई ए जो मनुष्य मानकर सब कथा को नहीं करी बहुत बड़ भारी कथा सब कहिसंती जे नारी और पुरुष दीटी जाति सुजने कर विवेक मु या ऊपर टिके बेसी गुरुत्व दिया एथि पई सेथि पई याकू टिके एम्फासिस देई करी सब मु कहिबी भारतवर्ष रे वर्तमान 6500 रु अधिका जाति अछंती विभिन्न जाति रे सब आमे सब माने भाग भाग ही करी अछु मु किछि दिन तळे सब कहउथली सेठी प्रदीप बाबू भी बसिचंती गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी रे कहउथली जे ये जो 6500 रु ऊर्ध्व जाति रे आमे सब बसिछु ताकू जानिबा पई केवल आमको आमर निजर निजर गाँ को जीवाको पड़िबो एवं आमे जदि देखिबु गोटे गाँ छोटिया गाँ एज ए यूनिट वर्ल्ड रो गोटे गोटे छोटिया कम्युनिटी रो गोटे यूनिट हिसाब रे देखिबु एठी सब माने डम पड़ा ब्राह्मण पड़ा माने गौड़ पड़ा अमक डमक इत्यादि सब अछंती एवं कास्ट रो एई भली गोटे कैरेक्टर ये जो कास्ट रो एभली गोटे कैरेक्टर जे जोठी तमे सब जन्म हेथिबो सेई माटी ही तुमको सब बेसी घृणा करे सेई लोक माने ही तुमको घृणा करंती जदि एबे वर्तमान एठी आमे जेतकी बसिछु कि आपण जेतकी बसिछु गोटे लोकन को जदि डाकी करी पचरा जीवो से ठिया हेथिबो यार जाति कोन तार ना सब छाड़ी दे करी ताले केही कहि परिबे नाही किंतु आमे जदि आमर निज गाँ को जदि जीवा बेले एटी अमको गणार पिला अमको डमर पिला कि अमको घासीर पिला कि चमड़ा कि अमको ब्राह्मणर पिला इत्यादि सब बोली कहबे एई जो कथाटा को एई जो डिस्क्रिमिनेशन टा को एते स्ट्रांगली से सब कहिसंती कि जे देयर इज ओनली टू कास्ट मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चरली बॉडी अनुसार आमर सब बड़ दुखर कथाटा होउची आमे जो एठी आमे जेतकी बेले सब कथा होउछु पांचटी कथा को नहीं करी बहुत केंद्रीभूत होइछि आमर सब इंटेलेक्चुअल्स मानकर मु जहा देखुछि जे पांचटी कथा को नहीं करी गोटे हैला तांकर जन्म को नहीं करी जे जन्म प्रकृति रे सब 1850 रे हेइथिला ना 1855 रे हेइथिला एई कथा को नहीं करी आमर ओडिसार बड़ बड़ विद्वान माने सब समय नष्ट करिसंती द्वितीय कथाटा हैला कोठी जन्म हेइथिला रेढाखोल रे ना जटासिंगा रे थेसिस बाहर करिसंती पंडित माने आउ किछि पंडित कहिसंती जे से अंध थिले ना आखि थिला परवर्ती कथाटा हैला महान पंडित माने सब कहि चलिले
जे से कंध थिले ना आउ को जातिर सबु थिले एवं ये जो प्रोटेस्टर कथा जितकी बेले सबू आसुची अलेखर कथा सबू से गोटे अन्य माने माने जो विचारटा को सब नहीं करी सब थयले अलेख अरूप इत्यादिर कथा सब नहीं करी सब कहले जमती कि सब कहते कि नहीं जे जगन्नाथंकर बड़ गुरु आसी महिमा स्वामी बोलिक जो कहते ये कथा गुड़ाक सब लोकंकर सब रेजिस्ट है ना पंडित मानकर तेणु सेठू से माने सब कौन करुछंती ना तांकर जो विचारटाकू जो लोक मैंने सब ग्रहण कले एटा होछि पाण धर्म एटा होछि गणा धर्म एटा होछि अनटचेबल्स मानकर सब धर्म बोलिकी कहले तो यही पांचटी कथा को लेकिरी ओडिशार विज्ञ पंडित माने गोटे महान विचारधारा जे कि यूनिवर्स रो पोएट जगत उद्धार कथा कहउछंती मु भाबुची हार्डली कौन सी विश्वर सब कवि माने जगतर उद्धार कथा सब कही थाई पारंती कि न पारंती मोर पढ़ा पढ़ी बहुत कम तो ये जगतर उद्धार करिछंती एते कथा गुड़ाक सब कहीदेला पर आमे तांकु केमती सब केंद्रीभूत कर देउछु सब भीम भोई को मु गोटे कथाटा सब माने आमर रेवर्ड प्रोफेसर चित्तरंजन दासंकर कथाटा लिखिकरी आनिछि ताको मु टिके पढ़ी देबा पई चाहूछि जे सबुठारु बड़ कथाटा है सोशल डिस्क्रिमिनेशन ठारू बहुत बड़ भारी डिस्क्रिमिनेशनटा है इंटेलेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन इंटेलेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन इज वेरी वेरी हाजार्डस फॉर द जेनरेशंस टू जेनरेशंस सेथिरे प्रोफेसर चित्तरंजन दास कहिले जमती कि ये कथा होता ना एवं बर्तमान जमी कहूँ सन्थ यदि कहीदेल बोलिकी कहले तो से मंदिर बसिले गिनी बजेले इत्यादि सब डोसाइल हो गले ही वाज नॉट सन्थ इन द सेंस दैट कि कॉमन लैंग्वेज जोटा अच्छे जो प्रोटेस्ट जो रिबेल अच्छी से रिबेलटा जो बोधे बहुत कम लोकंकर सब पृथ्वी सब अच्छी जोटा कि भीम भोईंकर सब अच्छी एवं ही डिकोडेड दिस थिंग्स तो से कथाटा को सी कहउछंती कि नहीं जे प्रोफेसर चित्तरंजन दास कहले कविवर राधानाथ ग्रीक नाटकर कहानी गुटी करू सामग्री नहीं आसी पारिले मात्र भीम भोई बोली समसामयिक समधर्मी बापुड़ाटीए किए प्रकृत रे अछि बोली जानी पारिले नाही फकीर मोहन केते गड़ जात बुली थिले बुली छंती बोली प्रतिपादित करिबा निमंते सरम्य वर्णनारे उत्कल भ्रमण कले तथापि सोनपुर भीम भोई को ठाब करि पारिले नाही भक्त कवि मधुसूदन सुदूर लिस्बन सहरर भूमिकंप विषय पिलांक पाई गद्य लेखाटीए लेखि थोईदेले ब्राह्मधर्मर संधानी रथरे नदी आकाश षड़ ऋतु और आहुरी केते केते भुवनर कथा कहिले मात्र भीम भोईंकर समाचार पाइले नाही सोनपुर बरपाली ठारू सतेअबा केई डाकर बाट होइथिले भी मध्य कवि गंगाधर मध्य से जाए माड़ी जाई पारिले नाही एटा मु उद्धार कली प्रोफेसर रेवर्ड चित्तरंजन दासंकर कथा सो दिस इज ए द इंटेलेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन एबे वर्तमान प्रकृति रे जदि आमर जदि सामान्यतम भी जदि कंसर्न अच्छी सोसाइटी उपरे लिटरेचर उपरे ताहेले प्रकृति रे सब भीम भोई को आमे टिके ठीक भाव में बुझीबार सब अच्छी एवं पढ़िबार अच्छी एइथिपाई ठीक भाव में बुझीबार अच्छी बोलिकी कहूँ पढ़िबार अच्छी बोलिकी कहूँ जे भीम भोईंकर कविता को पढ़िबा लगी तांकर दर्शन को बुझीबा लगी गोटे भल मनीष हबार दरकार सब अच्छी एवं धैर्यर आवश्यकता सब अच्छी थैंक यू बसुदा माने दुई तीनटा प्रसंग जोटा जे भीम भोई जो डिस्क्रिमिनेशन कथा गुड़ा को एड्रेस करछंती जे 52 कूल 36 पाटक जे अच्छ स्त्री पुरुष उच्च नीच बोली बारण न मानी नाम शरण पश सो नामटा को गोटे तैयारी करा होची जे एठी कौन सी प्रकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं भी गोटे समय से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन टाकू मध्य एलाउ करूनाहांती जे स्त्री आ पुरुष दुईटा जाति बोली जदि कहुच्छी किंतु दे हैव द इक्वल राइट्स एवं महिमा धर्म रे परवर्ती समय जदि आपण देखिबे एबे जो माने सबुठ बड़ न्यूज होची ओडिसा रे जे जोरंदार किछि आश्रम भांगी दिया गला
ता पछरे मुख्य कारण गुड़ाक थिला जे महिमा धर्म भितर जो रेडिकल एलिमेंट्स थिला से रेडिकल एलिमेंट्स रहिबो कि नाही ताकू नेकरी गत 100-150 वर्ष भितर एटा चली। बट द मेजर कॉन्सर्न, द मेजर क्वेश्चन इन भीमा भोई's poem was to question the authority of the king, the authority of the caste, the authority of the ritual, and the authority of intellectual domination. You know, sometimes it's very simplistic conclusion that why Radhanath Rai, Fakir Mohan, the pioneer of modernism, could not sense that there was a very powerful poet called Bhima Bhoi. Because Bhima Bhoi in his lifetime was never treated as a great poet. The pioneer of modern poetry in Odia, they were looking to somewhere else. They were not looking to their own root. They were trying to import the ideas of modernity through Greek and Latin literature. They did not see their own Achyutananda. They did not see their own Jasavanta Das or Ananta Das or Jagannath Das or their own Vedanta, which was talking about the idea of Alekha, the idea of Shunya, the idea of, it is very much ingredient in the Indian root. So that's so now going to प्रदीप कुमार पंडा को मोर एकदम गोटे स्पष्ट प्रश्न अच्छी जोटा मु वास्तव में चाहूली फणिंदम दा कहते कारण फणिंदम दा तार गोटे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देले किंतु तार लिटरेरी कंटेक्स्ट ये जो करुणा आउ विद्रोह जे जेते बेले आपणकर मन भितर गोटे प्रचंड विद्रोही सत्ता अच्छी से विद्रोही सत्ता भितरु ही करुणा जन्म निए एवं ताकू भीम भोई गोटे चमत्कार मेटाफर रे कहउछन्ते तांकर गोटे कविता रे हुतासनरु जलबिंदुए हेला प्रकाश। Out of that great fire a drop of water was born. That is the metaphor used by Bhima Bhoi. So that se हुतासनरु जलबिंदुरु प्रकाश पाउथुबा कवितार स्वरूपटी कोन एटा होची प्रदीप कुमार पंडा को मोर स्पष्ट प्रश्न। धन्यवाद केदार। समस्त बुद्धिजीवी मानक नमस्कार। प्रकृत में प्रश्नटी गोटे प्रश्न नुहे, यह स्वतः एक उत्तर। हुतासनरु ही जलबिंदु प्रकाश पाए जोटा कि विश्व ब्रह्मांडर सृष्टिर रहस्यर एकमात्र सत्य। एवं आम भितर भी जदि किछि करुणा जगत प्रति मनुष्य मान प्रति जदि अछि तेबे ताहार उद्गाता होची वस्तुतः आम भितर थिबा विद्रोहर अग्नि। जहाँ भी हो बड़ दुर्भाग्यर कथा दुई बंधु मोर आलोचना कर सारी ताकू पुणी टिके प्रलंबित करी मु जे आमर गोटे कवि को आमे केमिति चिन्हू कौन बोली डाकू ताहा आमर जातीयता को प्रकृत में चिन्ह है। आमर जाति को हमको चिन्ह है। आमे सारला दास को कहू शूद्र मुनि कहीं आउ केदार मिश्र को तो ब्राह्मण कवि बोली आमे कहू ना किंतु सारला दास को एमती कहू। भीम को कौन कहू सन्थ कवि। एपरिक आश्चर्य हे जे भितर जड़े हिंदी अनुवादक ओडिशा रे रहंती प्रसिद्ध अनुवादक दिनेश कुमार माली आपण मैंने समस्ते जानी। दिनेश कुमार माली महाराष्ट्र कौन बोधे राजस्थान लोक बोधे से एमसीएल काम करती। हाँ एमसीएल काम करती। से बहुत गुड़ा ओडिया बही हिंदी अनुवाद करिसेंती एवं ए भितर से गोटे भीम भोईंकर विषय गोटे उपन्यास लिखिछंती। तार शीर्षक हूँ कौन आश्चर्य हुए आप अंधा कवि। ये अंध कवि कहले जाई से लोकटी तार प्रकृत परिचय पाइब। सन्थ कवि कहले जाई से परिचय पाइब। ये जो आमर जो चेतना जो भावना
यही गोटे कविता को आम मूलरू मारिदेव। जड़े कवि सन्थ शब्दर अर्थ कौन ये जो कहते बासु भाई ये सन्थ कहले से मंदिर रे गिनी बजेब कि कौन कर कि गेरुआ वस्त्र पिंधिले जाए सन्थ ये धारणाटी आमर एबे भी रही किंतु सत कहवाक गले मोर दृष्टि रे साधारण अर्थ सन्थर डिक्शनरी भी आपण मैंने देखिपारती मु भी अभिधान देखले भी मिल जाई पारे। सन्थ कहले जड़े उदार चिंतन थिबो परोपकार थिबो हिंसा द्वेष नथिबो समस्त को भल पाउथबो सेवा परायणता थिबो ये गुण गुड़िक तो गोटे सन्थर गुण। जदि यह ही सन्थ शब्दर अर्थ जगतर क्यों कविटी सन्थ नुहे एवं जो कवि सन्थ नुहे से कवि ही नुहे मोर ये प्रकार विश्वास। जदि जगत प्रति मनीष प्रति प्राणी जगत प्रति पशु कीट पतंग पत्र एपरिक निर्जीव वस्तु मान प्रति जदि संवेदना नहीं तेबे से जेमिति सन्त हो पारिबो नहीं से भली कवि मध्य हो पारिबो नहीं। हाँ एक कथा सत जे सबु सन्थ कवि नुहंती किंतु सबु कवि सन्त होबाकू बाध्य। तेणु भीम भोई को आमे सन्थ बोली चिन्ही ताकू नामित करदेले हेब ना। एपरिक निज जो से कौपिनीधारी बा बलकलधारी जो बाबा माने अछंती से समय रे थिले आज भी अछंती से माने मध्य तांकू बाबा करिवार बहुत प्रयास करिसंती किंतु से बाबा हेई नाहंती। जेतेबेले महिमा गोसाई जहाँ को कहूँ आमे जे गोटे गोटे ईश्वरंकर निजे ईश्वर बा निजे ब्रह्म जन्म नहीं ओडिशा माटी रे एवं घर घर गाँ गाँ बुलूंती उदय होइचंती से लोक को आमे तो मंदिर रे बसई देले परवर्ती काल रे किंतु से तांकर जितेबाला देहांत हैला जोरंदा निकटरे आपण आश्चर्य हेबे से जोरंदा पाखकू जितेबाला भीम भोई तांकर सदळे बदळे आसुछंती सुदूर खलिया पारिरू तांको पसई देले नहीं जोरंदार बाबा मैंने तांको पसई देले नहीं। आज तो आप एबे तो खबर कागज पढ़ी थे गोटे कौन शून्य मंदिर को से भांगीदेले कोर्टर राय नहीं करी तो तांको भितर थिबा ए जो भीम भोई को से प्रवेश करई देले नहीं तार कारण होची जे भीम भोई अनेक अनेक भीम भोईकर अनेक फोटो आमे देखू जोटा कि फोटो तांकर तो नहीं तांको गेरुआ वस्त्र पिंधेकरी फोटो उठाती से किंतु गेरुआ वस्त्र पिंधु नथिले से शस्त्रीकर होउथिले तांको कहीं के कहते सन्यासिनी बोली दुई चार जन सन्यासिनी तांको संगे रहुथिले होई पारंती किंतु से भितर अंततः जड़े तांको स्त्री थिले एवं से साधारण वेश पोशाक पिंधुथिले। तेणु तांको से समय बाबा माने तांको निज संप्रदायर बाबा माने बाहर धर्मावलंबी माने हिंदू तथाकथित सनातन धर्मावलंबी माने तांको धर्मद्रोही तांको क्षीरस्तान आदि विभिन्न गाली देकर तांको अलगा कर देथिले से सबू ताको किसी काम देला नहीं कारण गोटे जन्मरू जे प्रेमिक से घृणा को भी प्रेम करे एवं भल पाइबा को भी भल पाए से भली एक मनीष एवं ये जो विद्रोह कथाटी आसुची विद्रोहटी आसबार गोटे जन्मगत प्रवृत्ति आसे ये जे वासुदेव मोर पाखरे बसिचंती वासुदेव कवितार गोटे प्रच्छन्न विद्रोह आपण मैंने देखिथे जो मैंने पढ़ी ये विद्रोहटी जन्म है केमिति कारण से व्यक्तिगत भाव में जन्मरू जीवन रे जो गाँव से जन्म होती से गाँव रे से भली अनेक अपमान अनेक घृणा अनेक प्रकार वितृष्णा पाई किंतु से भितरु से तांकर निजस्व प्रतिभा बल से मनीषटे है भितर गोटे विद्रोह जात हो से खड़ग धरी ना सत किंतु शब्द से प्रतिवाद कर आसुचंती। भीमंकर अवस्था मध्य ठीक तद्रूप भीम को तो केदार मिश्र गोटे आर्टिकल से लिखिं भीम भोई को किसी लोक एवं भी अच्छा बड़ गवेषक मैंने जो मैंने कहते भीम प्रकृत में कंध नथिले से गोटे ब्राह्मण संतान बोलिक बहुत लोक तो अजनी संभता कहती किंतु से आउ गोटे प्रसंग कारण भीमंकर रूपरेख जहाँ थिला जो चेहरा थिला से कंध टोका भली दिशु नथिले
एवं खूब परिच्छन्न बहुत सुंदर हैंडसम लोकटे थिले तेणु तांकु सहजरे से माने कंध बोली ग्रहण करने को प्रस्तुत नुहंती एवं एइथिपई प्रस्तुत नुहंती जे ए कंध गोटे लोक एमती कविता केमती लिखिबो हैं कंध हरिजन एमाने केमती कविता लिखिबे तेणु सेतिपई तांकु आमे तांकु गोटे अन्य रूप देवार प्रयास मध्य करिछु तेणु जन्मरू एभली विभिन्न प्रकार निर्यातना पाई से तांको भितरे जो जो अग्निटी संगोपित अग्निटी थिला हृदय भितरे से विभिन्न रूप रे आसीछि करुणा भाव रे आसी मनुष्य को भल पाइछंती किंतु से भल पाइबा भितरे तांकर स्वरटी उद्रिक्त होइछि जाति कथा संपर्क रे एबे कहउतले भाई एते तांकर पदटी मु पढी होछि जोटा से कहउतले तिनी ब्रह्मांडरे लोड़ी आस तुंडे एक जन एक जाति तिनी ब्रह्मांडरे लोड़ी आस तुंडे एक जन एक जाति सेई सबंकु शत जाति करिछि ताहार रचिला पृथ्वी स्त्री पुरुषंकु गढ़ी अछि जोड़िए स्वरूप देख द्वितीय जातिरु तिनी जाति नहीं सुजने कर विवेक ब्रह्मांडरे आ जाति किछि नहीं जड़े एवं गोटे जाति ही ए विश्वर तार दुईटी रूप गोटे स्त्री एवं पुरुष तृतीय जदि किछि अछि विवेक चक्षुरे खोज पाइब नाही एथिरे तो गोटे विद्रोह रही कारण कवितार मूल प्राणटी होची दुईटी कथा आमे कवितार गोटे गोटे बाद निर्धारण करूँ विभिन्न प्रकार जे आमे जेमति प्रगतिवाद बा शून्यवाद बा अन्य जेकोसी वाद भी एवं से बाद भितर आमे गोटे गोटे कवि को बांधी देवार प्रयास करूँ जमती भीम भोई को बांधीचु जे ये होचंती शून्यवादी कवि बा ब्रजनाथ रथ को बांधी देइछु होचंती प्रगतिवादी कवि बा अन्य कवि मानकु किंतु ये बाद भितर से माने प्रकृति रे सीमित नुहंती सेमानक भितर थिबा जो प्रश्न कविता होची गोटे प्रश्नाकुलता जहार उत्तर नाही एवं से उत्तरटी कवि जानी प्रकाश करि पारेने से खाली प्रश्न पचारू थाए तेणु आमे प्रश्न कौ विषय प्रश्न करिवो कवि ता होची तार परिचय जे आमे प्रकृत रे प्रश्न करिवा काहाकू एवं कौन प्रश्न करिवा समाजर जो दुर्बल जो माने निर्यातित जो माने शोषित आम भितरे थिबा भोक आम भितरे थिबा जो अवशोष ये सब को प्रश्न करिवा ना आमर समस्त स्थितावस्था को नहीं ये समस्त चाकचक्य को नहीं प्रश्न करिवा तेणु कवि भीम भोई बाछि थिले प्रश्न करिया पई ताकर मुख्य दुईटी प्रश्न थिला गोटे होची जातिवाद को नहीं अन्यटी होची स्त्री पुरुष को नहीं नारी पुरुष को नहीं एवं दुईटी प्रश्न पचारिवा भितर ही तांकर विभिन्न प्रकार अग्नि तांको भितरु उद्गीरण होइथिला आ गोटे तृतीय कथा होची जे आध्यात्मिकता कवि भीम थिले शून्यवादी जितेबेले ओडिशार संस्कृति बा ओडिशार प्राण बोली आमे कहू जगन्नाथ को एवं जगन्नाथ संस्कृति जितेबेले प्रबलतर समग्र ओडिशा को गोटे प्रकार बांधी रखिथिला बेली गोटे धर्म सेतेबेले से ए धर्म को आध्यात्मिकता को नहीं प्रश्न करिसेंते भीम भोई से पचारुचंती मूर्ति पूजा विरुद्ध रे से स्वर उत्तोलन करिसेंते जगन्नाथ जदि जगतर नाथ तेबे ठावए कहीं से रुहंती तेणु से पद्यटा कही दे से जेबे जगन्नाथ होंता ठाव के किंपाई करंता जगत जाक समचित तेबे बोलंती जगन्नाथ ए घटे जगन्नाथ अछि प्रतिमा मिछरे पूजुछि मूर्ति प्रतिमा शुष्क काठ से पुणी नेब कि वैकुंठ तेणु ये प्रकार प्रश्न करवा गोटे परिवेश रे जेतेबेले संस्कृति आमको माड़ी बसी से परिवेश रे एभली प्रश्न करिवार जो दंभ एवं से पुणी गोटे गोटे दलित अवहेलित संप्रदायर गोटे जहाँ को कि निरक्षर बोली कहूँ आमे जहाँ को निजर परिवार बोली तार किछि नाही तार समाज बोली किछि नाही तार रक्षक कहीं नाहंती एपरिक तार निजर धर्म संप्रदाय जहाँ को तिरस्कार करुछंती
से एभली प्रश्न भी करि पारुछि। तेणु मु भावुछि ए जो प्रश्नटी केदार मते मूलरू कहिथिले जे वस्तुतः जदि भीम भोईंकर एकमात्र परिचय से परिचयटी जड़े कविर परिचय हो, जड़े विद्रोहीर परिचय हो एवं ଏହା ଉପରେ ହିଁ गवेषणा सब आमर केन्द्रित हो। आमे तांकर अंधत्व, तांकर जन्म, तांकर जाति ये गोत्र को न जाई तांकर ये जो स्परटी को नहीं आमे केमिति आगो को बढ़ी पारिबा से दिगरे आमर आलोचना हेबा उचित। धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीदा। गोटे दुई तीनटा कथा उठिला जे गोटे होची जे जेंडर को लेकर जो क्वेश्चन जेंडर जस्टिस तापर कास्ट गोटे कास्टलेस सोसाइटी एवं तारी भितर सबुठ बड़ कथा गोटे ह्यूमैनिटेरियन गोटे इगालिटेरियन सोसाइटी परिकल्पना टू ड्रीम फॉर इगालिटेरियन सोसाइटी जो थे सबुठ बड़ पद किसी अच्छी जमती धरतु स्तुति चिंतामणि ही इज टॉकिंग अबाउट एक खंड हाड़ बुंदाए रुधिर फुटे माउस जाणई तेणु करी सिना प्राणी विकल सही न पारुछि मुहि। आई नो दैट मैन इज ए कंपोजिशन ऑफ फ्लेश बोन एंड ब्लड, दैट्स वाई आई कैनॉट टॉलरेट द पेन ऑफ ह्यूमन बीइंग बिकॉज आई एम द कंपोजिशन ऑफ दैट सेम ब्लड फ्लेश एंड बोन। एका खड़गरे 10-8 मुंड छिड़ई भारत युद्धे आरेक अंग को पादे प्रहारिले ए अंग को मोर बाधे। I can see this world is full of violence. At one stroke you can behead 8 or 10, but when you hit other, that pains me. So only a poet who can feel the pain of his time can express the language of compassion like this. So I think we don't have much time now. I don't want to go for the second round of question. But दुई तीन कथा मु टिके क्लियर करने को चाहूँगी। प्रथम कथा हूँ अंधत्व को लेकर ओडिया बुद्धिजीवी मान भीतर प्रश्नटी आसला कहीं व्हाई इट वाज ट्रीटेड दैट भीमा भोई वाज ए ब्लाइंड पोएट। None of his contemporary had written that he was a blind man. Rather, the king of Sonpur, who wrote a letter to Professor Arthapalla Mahanti in 1927 when the first book Stuti Chintamani was published, and he wrote a preface that it was supposed that he was a blind poet. And the king of Sonpur protested that I have seen Bhima Bhoi, he was not a blind man. The debates would have ended there. What Professor Mahanti did, he wrote a footnote to that letter and said that, okay, what Mr. B.M. Singh Deo is saying may be correct, but I have seen many blind people are able to compose poems. Somebody is saying that I have seen that man and he was not blind, but Professor Mahanti, who is writing on Bhima Bhoi in Cuttack, is saying that he might be blind. And from there, a terrible debate started whether the man was blind or not. Number two, the question of caste. In Odia poetry scenario, at least 3 poets has asserted again and again their caste character. It is not people like us who told that Saraladas was a Sudra. Rather, it is Saraladas who is asserting again and again that yes, I am a Sudra and I am capable of writing. And I am writing because Sarala, Ma Sarala is dictating me to write. It is Salabega who is asserting his Javana identity again and again, saying that my Javana identity will not stop me to write poetry and to stand against social injustice. And it is Bhima Bhoi who is not hiding his tribal identity in almost in every poetry, in the end of every poetry, he is saying that, yes, I am a Kantha. Because this tribal identity is very important in poetic dimension of India. Imagine, even today, every 4th Odia is a tribal.
Every fourth Odia, because we have 24% tribal population in Odisha right now. But we don't have a single significant Odia poet coming from tribal community. That's why, that assertion of that tribal identity in Bhima Bhoi's poetry is very, very important. And in the beginning, I told that the tribal motifs, the tribal images, the tribal imagination. If you see the mystical composition in his poetry, Lata bane buli dekha beni goti puspa. There is a garden where there are only a couple of flowers. And I can quote so many of his poems, which is strikingly and originally tribal. So I believe that he is the most significant tribal voice of the world. In the latter phase, we can see that the Latin American poets or African poets, the black poetry movement, we see this uprising of margin, uprising of oppressing voices. But it was Bhima Bhoi who gave voice to the voiceless. So we celebrate that great poetry, and thank you very much for giving this opportunity for this session. And I thank my co-panelists, Dr. Fanindam Deo, Dr. Basudev Sunani, and Dr. Pradeep Kumar Panda. And it was an excellent panel of discussion. Thank you very much. Yes, this is Odisha Art and Literature Festival in 2020-22, and organized by Dhauli Review Trust, whereas associate sponsor is Indian Oil, and simultaneously with the sponsor and supported by Shale and NALCO, and simultaneously Union Bank of India and OHPC. So once again, we want to thank them, the whole organizations, and also the behalf of this pageant, we convey them a heartiest thanks for this support.